Welcome to VLearn. This is session number 3 of PHP. In this session, we'll discuss about how we write the scripts in PHP. हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे PHP के अंदर बेसिकली वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, किस तरीके से रखे जाते हैं, वेरिएबल कैसे कॉल किए जाते हैं. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. मींस एक HTML के फॉर्म से अगर कम्युनिकेशन करना हो तो हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्म. Then we'll discuss about conditional statements in PHP, for loop in PHP, while loop in PHP, and different programming concepts. And we'll also try to understand the errors and logs of PHP. So let's begin with understanding the variables and writing the first script. So before we start writing, let's understand where we write. The first thing is we require a text editor. टेक्स्ट एडिटर किस लिए चाहिए? ताकि हम कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकें. स्क्रिप्ट कहाँ लिखेंगे? स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट रूट डिफ़ाइन किया था httpd.conf के अंदर आपने डॉक्यूमेंट रूट डिफ़ाइन किया था, योर स्क्रिप्ट शुड बी देयर ओनली. अगर आपको नहीं ध्यान है तो जस्ट राइट हियर cat /etc/conf/httpd.conf and grep document root, and here you can find document root is defined at /var/www/html. Okay, so where you have to place all the scripts in the same folder /var/www/html. Now suppose if I am not interested to put all the scripts over here, मुझे किसी और जगह पे अगर scripts रखनी है तो I have to create a virtual directory for that, and then only I can move ahead. How to create a virtual directory? For this, what you have to do, you have to switch yourself to conf.d folder. /etc/httpd/conf.d. Okay, and in this directory you will find some configuration directory, configuration files. Some configuration files are predefined here, and some configuration files are written by user. So you can create your own configuration configuration file over here. So I am creating here my own, that is php demo.php.conf. Okay, now here we have to define our document root and any virtual directory which we want to create. So virtual directory create कैसे करेंगे, इसके steps देखते हैं. So यहाँ आप देख सकते हैं we have written a configuration file. इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एलियास डिफ़ाइन किया, किस नाम से उस वर्चुअल डायरेक्टरी को हम रीड करेंगे. दैट मीन्स /phpdemo/var/www/phpdemo. Okay, that means in directory www we are creating another directory with the name phpdemo. Okay, and that will be treated as phpdemo home page. Okay, now onto this location what we want to allow everybody, that means allow from all. Okay, if you want to put an additional option, you can define here additional options also, but I don't want to put any additional option, so this is sufficient enough. Okay, now just quit from the file and write here service httpd restart. Okay, you have to restart the service so that the updated configuration can be executed here. This will take some time.
but when it starts, it will carry that your virtual directory whatever you have named. Please make sure that you have created the directory first and then you have started the server. Okay, I haven't created it, so just I'm defining the directory for creation again. /var/www and create here mkdir php demo. Okay, and here you can see the privileges, that is root has all privileges, then others have rx. Now restart the server again. Okay, now come to the directory. Now here you have to create any file that will be visible on the browser. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी पहली फाइल क्रिएट करते हैं first.php. So this is our first PHP script. Now before I start understanding PHP scripts, let's talk about how to write it. कोई भी PHP का स्टेटमेंट होता है that starts with this particular sign that we call as delimiter, start delimiter and end delimiter. इसके बाहर का जो भी कोड होता है that will be a HTML code. For example, here I have written HTML head title, and in title I have written this is my first script in PHP. Okay, now close the title and then come to body. Now within the body, what I want to get something printed through PHP. So to print something from PHP, you have three statements that you can use. I am using first statement as echo. This statement is printed by echo. Second, you can use print. This statement is printed by print. And third, you can use printf. This statement is printed by printf function. Okay, remember one thing, in printf it is must that you use these brackets, but in case of echo and print you can leave this, you can use this. One more thing, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर लाइन के ख़त्म होने के बाद आपको सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है. Any statement written in PHP is ending with semicolon. Okay, now save this and quit. Now open the web browser. Now after opening the web browser, write here the IP address of the server and then write here PHP demo and then your script name, that is first.php. When you click this, you will find that all the three statements that we have written are printed here, and you can see here the title is
This is my first script in PHP. Okay, now here we have to understand one thing, that web browser is understanding only HTML. It is not understanding any other language. So whatever statements we have written with the help of PHP, these are treated as some text. Means the output that is produced by the PHP is a text, and it is treated as HTML page that is to be executed by the browser. Okay, अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग भी है, तो उसके साथ में यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल टैग्स लगाने पड़ेंगे. जैसे लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो जस्ट पुट हियर BR. ओके, just put here BR and then save and quit. Okay, now come to the browser again and just make a refresh, and you can see the first statement is printed by echo, second one is printed by print, and third one by printf. Okay, now अब अगला काम हमें क्या करना है, हम एक बार इसका सोर्स व्यू करना चाहते हैं. अगर सोर्स व्यू करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स एक साथ चिपके हुए आए हैं, एंड देयर इज़ नो डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकेंड स्टेटमेंट. मीन्स द HTML code is not formatted. Why it is not formatted? Because we haven't formatted it with the help of PHP. So how to format this part? इसके लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने BR लगाया है इसके साथ में एक और स्टेटमेंट लगा दीजिए /n. and now have a look at the results. So आपको दिखता है कि यहाँ पे जो है HTML कोड भी फॉर्मेटेड हो गया. दैट मीन्स अगर आपको फॉर्मेटिंग HTML कोड की करनी है, you can use /n, you can use /t, and you can format with the help of these modifiers. और अगर आपको आउटपुट मॉडिफाई करना है, दैट मीन्स ब्राउज़र पे जो आउटपुट दिख रहा है वो मॉडिफाई करना है, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू यूज़ HTML tags. Okay, now come back to the first script again. Now here we haven't defined any data variable. Suppose I want to define some data variable. So here we don't have to go for the definition part. यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा वेरिएबल को डॉलर के नाम से स्टार्ट करते हैं. और फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग हियर $name, and here I am giving the name as virtual learning network. ओके, अब इसको जहाँ भी प्रिंट करना है आप इसे प्रिंट कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग printf function, then the way of printing will be very much like your C, like right here %s, comma, and $name. Okay, so you can see here the results. Just refresh the page and you can find that the name is printed. Okay, अगर यही आप इको स्टेटमेंट से प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करना पड़ेगा. एंड टू कॉन्कैटिनेट 2 strings, what we use in case of PHP is we use dot operator. Okay, so here string 1 के ख़त्म होने के बाद dot and $name. Okay, in the same way in print statement also we have to do the same thing. Okay, and now you can see
virtual learning network has been printed just after first statement as well as after second statement. Okay, now after printing a statement, what we require next? We require to communicate with the user. That means हमें क्या चाहिए? हमें यूज़र से एंट्री चाहिए, यूज़र कुछ लिखे और हम उसको पढ़ पाएँ. सो वेब पेजेस के केस में जो हम यूज़र से कम्युनिकेशन करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसके लिए हमारे पास HTML फॉर्म्स होते हैं. सो वी हैव टू डिज़ाइन अ फॉर्म फॉर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ यूज़र. ओके, सो यूज़र से कम्युनिकेशन के लिए हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे. एंड आई जस्ट एम पुटिंग हियर वन स्टेटमेंट लाइक I want to take the name of user and I just want to give a personal comment. Okay, so vim and name.php. You can write here name.html also, doesn't matter. Okay, because the content is of HTML only. Define title of the page and write here in the body. You have to define here form, and then with form you have to define method. Method can be two things. It can be get or it can be post. If you are giving here get, that means whatever you are sending, that variable is passed through URL. Okay, if you are giving here post, then the variable is transmitted in parts and it is posted to the user, so it will not be displayed in URL. Okay, then on what page you want to define the action. That means आपने name.php पेज से कॉल किया है, अब ये फॉर्म सबमिट होगा तो किसके पास जाएगा, वो नाम हम यहाँ डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल greet.php is the page on which I just want to send the user. Okay, so method यूज़ कर रहे हैं get और भेज रहे हैं greet.php पे. Okay, this is the name of the variable that you want to define. And if you want to define some default value, then you can define here like enter your name. Okay, so in this statement what's happening, we are defining a variable and उस वेरिएबल के एक हमने फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके ऊपर एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, एक टेक्स्ट बॉक्स है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एंटर योर नेम. उस वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम. इफ़ यू वांट टू पुट सम लेबल, सो यू कैन पुट जस्ट बिफोर द फॉर्म or you just before the input. Now save and quit and come back to your web browser, and on web browser just change the URL, and instead of first.php here we require name.php, and you can see here it is asking for username, but we have missed one thing, we haven't defined submit page. Okay, so let's go for submit.
So here whatever name you define, that will be the name written on the submit button, and the type of button we have defined as submit. Okay, so just back to the web browser, and here you can see go is written over there. Okay, now you can put some validations also. We haven't created greet page. Now come to the greet, vim greet.php. now मुझे क्या करना है, यूज़र ने जो वेरिएबल्स दिए हैं मुझे वो वेरिएबल्स रीड करने हैं तो कैसे करें? सो फॉर दिस वी हैव टू मेथड्स हियर. जो भी यूज़र इनपुट करता है आपको फॉर्म के हेल्प से, चाहे वो गेट मेथड से करे या पोस्ट मेथड से करे, इन बोथ द केसेस देयर इज़ अ वेरिएबल रिक्वेस्ट वेरिएबल जो कि गेट और पोस्ट दोनों के ही वेरिएबल्स को कैरी करता है. ठीक है, अब मुझे अगर सपोज यूज़र नेम प्रिंट कराना है, सो आई कैन यूज़ इको $_ request, and then in this request I can define username. So in this way I can access the username. अगर आप इसको पर्सनलाइज करना चाहते हैं, जस्ट हाई प्रिंट करना चाहते हैं इसके पहले, हाई डॉट एंड रेस्ट इज सेम. Just save this and go to your web browser, refresh the page, write here your name. For example, I am writing here virtual learning network. Okay, and now click on go, and here you can see hi virtual learning network, and whatever the message you want you can get printed. Okay, that's all for this part of the session. In next part of the session we'll discuss about how to use this variable and how basically we can perform some mathematical calculation, and we can perform different kind of looping and comparison operations using this PHP language. That's all for now. Thank you.